multiple choice questions. A particle is initially at rest, okay, displaced by applying a non-conservative force F in uniform gravitational field. Uniform gravitational field, right? Initially rest पर है, तुमने इसको discuss किया. In the process, following physical quantities associated with the particle are measured. Change in gravitational potential energy, change in kinetic energy, or uniform gravitational field, right? Okay, work done by the force F. So क्या करना है अपने को? Work done by the gravitational force, okay. So delta W2 is equal to negative delta U. That's of course correct. So अपने को A तो correct है, समझ रहा है. या मतलब तुम्हारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा तब तुम्हारा वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव रहेगा, राइट? ओके, डेल्टा K just W1 W2, राइट? सो B is the answer. ओके, और क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स F और उसके अलावा एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, राइट? राइट, सो B is correct. और क्या है? डेल्टा K प्लस डेल्टा U is equal to नहीं. Yeah, of course, delta K is equal to delta W1 plus delta W2, right? That's just how it's supposed to be. So delta K plus delta U is equal to delta W1 basically, right? That's the thing. Okay, next, second. A small solid ball of density rho is held inside at a point O in a closed cubical container of side length L, filled with ideal liquid of density 4 rho as shown. Now, if the container starts moving with constant acceleration A horizontally, okay, the ball is released from the point A simultaneously. तो acceleration ऐसा है, A in this direction, this thing is L upon 2 whatever, ठीक है, और ball तुमने release किया, okay, for ball to hit the top of the container, A is, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ दिया है क्या अपने को? नहीं दिया है. डेंसिटी रो और लिक्विड की डेंसिटी 4 रो है. That's weird. So ये ऐसे जाएगा and then it's gonna be like this. Oh god. Held inside. Ball is released. Okay, fine. For ball to hit the top of the container at end Q. Oh, okay. I get what's gonna happen. So with respect to ये जो cylinder रहेगा, acceleration ऐसा है and there's also like gravity. So okay, so A in that direction, G in that direction. So like उसका G effective इस direction में और A effective इस direction, right? So basically वो इस type से जा रहा है. That makes sense. So for that to happen, of course, okay, G effective is just, you know the thing, कुछ तो भी तो constant रहेगा, which we'll figure out later on. कर ही लेना क्या कर रहा है. So ball की density कितनी है? It is रो और इसकी डेंसिटी क्या है? 4 रो. So your deal is like G times of क्या the density of water upon density of that, right? So it's gonna be 4 minus 1, like 3G is upward, or similarly 3A in this direction. Wait, okay, ये acceleration direction, and then it is sure. So 3A in that direction, 3G in that direction, और अगर इसको Q को hit करना है, then of course what should happen is like A must just be 2 times G. So A equal to 2G if it has to hit at Q. So B is correct. And what else? Ball hits the top of the container at end Q after time this much. Well, okay, so ये L upon 2 है and this thing is L, right? ये कितना होगा? Oh, this must be L instead. नहीं, अच्छा ये L है ना, right? वो लेंथ कितनी होने वाली? Like square root. क्यों मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूँ? Isn't that easy? क्योंकि अपन already like, yeah, why have we been doing this? After some time, sure. I mean नहीं यार, ये तो सही नहीं होगा. Square root में क्यों है ये सब? That doesn't make any sense. It should not be in square roots, right? Doesn't matter कि क्या हो रहा है. जब उसको टॉप में हिट करना है, just L upon 2 upon ये, oh okay, acceleration है, sorry, not the velocity. So L upon 2 is equal to half and then G, which is in this case 3G T square, right? Yeah. So T square is equal to L upon 3G. तो इसका square root ले लो. Square root of 3 L upon 3G, which is option C. Next question. Third question. Third is, okay, the end of capillary tube with a radius R is immersed in water when the water rises in the tube. Okay, ends of capillary tube with radius R
Okay, single end है. Okay, immerse in water. When the water rises in tube, उसके आगे क्या है? Water rises to a height something, force of surface tension performs some work. Potential energy of the water increases by this much. Heat involved during the process is this much. Right, something like that, right? Okay. सरफेस टेंशन जितना वर्क करेगा वो बेसिकली सरफेस एनर्जी नहीं हो जाएगी बेसिकली बिकॉज इट्स डिफाइंड बाय सरफेस एनर्जी अपॉन दी. हाँ ठीक है ना. सो राइट water when the water rises in the tube. Okay, think about it. I mean of course height तो अपन easily निकाल सकते हैं, just right, so rho g h is just equal to 2t upon density of water. Let's just assume कि वो hemispherical रहने वाला है and then it's just going to be r in that case. So yes, h will just be this thing, so a is correct accordingly. Okay, assuming content equals 0. Okay, and what force of surface tension performs some work. Right, okay, so ये ऊपर जाते रहेगा surface tension को like okay it's gonna go up and so initially ऐसा था और अब ऐसा हो गया है 4 pi t square times rho g. That's kind of work done with surface tension. Surface energy increase हो चुकी है and potential energy भी increase हो चुकी है, right? Because वो ऊपर जा चुका है. Is it not correct? Doesn't look correct about this. My surface energy increase हुई कि decrease हुई? Of course it must have increased, right? Because yeah, okay, sure it did increase. तो wait, surface energy increase थोड़ी ना होनी चाहिए. It should decrease, isn't it? या तो फिर ऐसा हुआ क्यों exactly? Surface energy must always decrease, नहीं तो फिर वो ऐसा करता ही क्यों पहली बात? Yeah. But surface energy is minimum whenever it's like a plane surface. तो ये क्यों हो रहा है? ये surface पे चढ़ क्यों रहा है exactly? This is very weird, isn't it? I know energetically favorable है because उसमें right जो ये जो force रहेगा like ये yeah at some kind of angle, we know angle 0 है whatever. So इसको ये wetting कर रहा है, wetting this actually is favorable but still it's like weird. Okay, अपने करना क्या है? Work done by the surface tension. So right कितना होगा the surface tension का work force कितना है? T times of 2 pi r. Okay, और तुमने कितनी हाइट ऊपर ली? दिस मच. सो 2t अपॉन रो जी आर बेसिकली, राइट? तो ये गया जिसमें लाइक 4 पाई टी स्क्वायर अपॉन रो जी, आई गेस, राइट? या श्योर, कोई और तरीका नहीं है ये वर्क देखने का. या सो दैट इज द थिंग, that's the work because of surface tension. Sure. And so potential energy का increase है, what is that? That's just going to be like rho g h times sorry mgh. Yeah, okay, जो पूरा अपन ने मास लिया, right? It's like integration करना पड़ेगा अपने को, which is just not good. Think about it. Okay, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक रहने वाला उसका मास कितना है? उसका मास है rho times a times h. Okay, उसकी हाइट है h upon 2 and then g, right? So h upon 2 is उसके center of mass की height. So this is the energy that it gained, I guess, right? So ये हो जाएगा rho a h square. Oh god, पाई वगैरह तो आ नहीं रहा है. This doesn't look okay. A में पाई आ जाएगा. That makes sense. Okay, g upon 2. So this will just be right. It's like pi r squared. Something's not looking correct about this. Right. इसमें upon 2 में क्यों आ रहा है सब? Yeah, something's not right about this. Okay, pi r squared and then got h square rho g upon 2. What? This shouldn't be correct. No, it shouldn't be. ऐसा क्यों हो रहा है? h upon 2 से ऊपर गया ना? What else? नहीं रे, h से ऊपर गया, not h upon 2. Oh, that's how it's supposed to be, huh? Okay, so ये चीज is that correct or not? That's the gravitational potential energy जो increase हुई, of course. Heat evolved during process. Wait, doesn't look correct after all. It's definitely just pi r squared. What's the big deal about it?
ठीक है यार, just move on. So B is correct. Other than that, I don't know what there is. So next question. Uh, yeah, fourth. A planet is revolving around the sun in elliptical orbit. The work done on the planet by the gravitational force of the sun is zero in some parts of the orbit, in no part of the orbit. Work done on the planet by the gravitational force. So जब भी gravitational force कम right उसका जो field है force is a perpendicular to the velocity at that point, right? Because F dot ds is the dw thing. So velocity should be perpendicular to that. And when does that happen? Only at two positions, you know, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इसे तभी होता है ना ये. So at two places. Oh, okay, you mean like on arc or something, huh? Okay, in some parts of the orbit, no way. In no parts. So कुछ parts में zero है कि no part of the orbit. I mean नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना है. तुम यहाँ से यहाँ पे गए, तुम्हारी एनर्जी का चेंज कितना हुआ? काइनेटिक एनर्जी बाय द वे जीरो. तो ग्रेविटेशनल राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया जस्ट जीरो इन फैक्ट. सो या in some part, okay, that makes sense. In some parts of the orbit, so यहाँ से यहाँ जा रहे हो, it's zero and everything, ठीक है. In any part of the orbit, in one complete revolution, of course. So D is correct, and I think A is also correct. Next, fifth. Two concentric spherical shells are as shown. The magnitude of the gravitational potential and field strength vary with distance r. So shells है ये, okay. Gravitational potential and field strength vary with distance r as shown. Sorry, r as. Okay, तो initially zero रहने वाला है, उसके बाद में अचानक से ये आ जाएगा, like okay, because of that this will be degrading but constant. Okay, और फिर अचानक से वापस एक और discontinuity आएगी. So I guess this is looking correct. This doesn't look correct. This doesn't. Potential. Oh, sorry, I thought it was field. But field के लिए what is this? ये नीचे क्यों हो रहा है? अचानक से ऊपर गया and then okay, नीचे तो सही है, but फिर ये वापस नीचे क्यों आया? Because right, it's gravity, so it's supposed to be increasing, right? क्योंकि यहाँ पे और mass आ गया and then that's why. So B is incorrect, A is correct. और क्या है? Is C correct or not? So potential. राइट, पहले तो कांस्टेंट है, ठीक है ना. सी मैं करेक्ट बोल देता हूँ. पहले कांस्टेंट है, उसके बाद में इट्स डिक्रीजिंग बिकॉज 1/r इन एवरीथिंग, और फिर अचानक से यू नो राइट ओके वापस 1/r, बट अब दो आ गए इसमें. सो डिक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट और वॉट एवर. दैट मेक्स सेंस. श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Some pieces of impurity is embedded in ice. The ice is floating in water. When ice melts, level of water will. Impurity है ice में, okay. Ice is floating in water. When ice melts, level of water will. So pieces of impurity उनकी density rho है. Okay. So fall और क्या क्या. Oh God. Shit. Initially क्या है? Initially जो water की volume थी वो है, plus जो immersed volume है वो है, right? अपने को level of water के बारे में बोलना है तो इससे proportional रहने वाला है 1/A times. ठीक है. तो level of water, okay, is like capital M plus small m upon density of, wait, is that right or not? M times G is equal to volume times density times, right, density of water, of course, essentially. So yeah, density of water. This is the volume initially, और finally क्या हो जाएगा? V naught plus. So suppose वो sync करते, अपन assume करते वो sync करते, then yeah, okay, तब क्या हो जाएगा? जो छोटे पीसेस है वो नीचे गिर जाएंगे. सो m अपॉन ठीक है, वो उनकी जो वॉल्यूम है वो रह जाएगी लाइक m अपॉन डेंसिटी ऑफ दी सॉलिड पीसेस, उसमें रो बोल रहा हूँ, प्लस अब से भी आइस जो है वो ऊपर है. ओह, एंड आइस मेल्ट हो गया. ओह गॉड. तो वो जो वॉल्यूम है वो तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी ना, राइट? इट्स गोना इंक्रीज मोस्ट लाइकली. बट वो भी है कि डेंसिटी हो सकती है यहाँ पे, ओके, क्योंकि दिस इज वियर्ड. ओके, प्लस m अपॉन राइट, जो पूरा वो मास था जो कि मेल्ट हुआ, दैट इज m, and then that thing upon the density of what? Wait, this is weird. So somehow ये still वही है. Okay, awesome. लगा नहीं था ऐसा होगा, बट ऐसा हो तो रहा है. Okay, cool. तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐसे आ जाएगी क्या? सपोज ये नीचे गया तो isn't that right? और अगर ये सिर्फ फ्लोट कर देना जैसे m अपॉन
रो W and m upon रो, तो अगर ये अगर ये फ्लोट करता है just won't change because ये still float करेगी और वो पानी, हाँ ठीक है, so it will remain unchanged if ये float करता है, that is rho is less than rho W, so B is correct. और क्या है, अगर ऐसा नहीं है so rho is actually bigger, तो फिर जो चीज रहेगी that's less than this guy, right, which means कि हाँ ठीक है ना, it's gonna be less than that because 1 upon rho is smaller than 1 upon 2 W, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगी, so it's gonna increase, so rise if rho is bigger than, हाँ ठीक है, so D is correct. Cool. Next question. Seventh is the viscous force acting on solid ball of surface area A moving with terminal velocity B is proportional to surface area A, right? Okay. Viscous force. Seriously. Solid ball. So it's proportional to R and then it's proportional to V, right? So viscosity से भी है but वो उसको रहने दो. And then R is proportional to square root of A. So this is the thing, A power 1 upon 2 and then V, I guess. So B is there and C is there. BC. Next, 8th question. A tunnel is dug along chord of the earth at a perpendicular distance r upon 2 from the earth's center. The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. A particle is released from the one end of the tunnel. The pressing force by the particle on the wall and the acceleration of the particle vary with x. Oh god, ड्रॉ करो इसको. तो ये अपनी अर्थ है, यहाँ पे तुमने टनल डिग की है, यहाँ पे तुम्हारा रेडियस वेक्टर रहने वाला है, whatever. The good thing is it's proportional to r, right? That's how this thing is proportional to, of course. So right, and here is just रहने वाला है. So at any given moment अगर तुम्हारा ऐसा है then right, it's like gm upon, so जो हमारा जो force रहने वाला है gm upon r square, just acceleration, हमारा जो acceleration रहेगा it's like g, but it's linearly related to small r, right? So r upon r, yeah, that's the thing. So उसका component मतलब कि mg r upon r is in this direction, और फिर उसको तुम direction like okay this is the thing, yeah, this is the force on this guy. So yeah, cool. Particles released from the rest, okay, from one end of tunnel, pressing force by particle on wall and acceleration of the particle vary with x. X है क्या exactly? Distance of the particle from the center. Oh, so this thing is x, huh? Cool. So yeah, okay. Right, okay. Acceleration यहाँ पे minimum रहने वाली है, यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पे deceleration हो रही है, whatever. Okay, यहाँ पे maximum रहेगी most likely because it's proportional to x vector. Yeah. So इसका बस अपने को component लेना है along this guy. Yeah, right. So it's just that's why it's SHM, of course. और इसका ये जो component रहेगा that's actually a constant. So normal force somehow is a constant. Wow. Isn't that interesting? Huh. Very interesting actually. Okay, so pressing force is a constant and acceleration is, yeah, it's proportional to x. So it's a negative proportional to x. So pressing force r upon 2x is equal to r. Yeah, it's gonna be constant, whatever. और क्या है? और acceleration कहाँ पर है? ये what? No, I mean it's like okay, so x जो है वो ये चीज है, not this thing. अगर ये होता then it would be actually linearly related, but ऐसा नहीं है. So C and B most likely. Right, next. 9th. ये नया है और अच्छा भी है in fact. 9th. A spring balance reads W1 when a ball is suspended from it. A weighing machine reads W2 when a tank of liquid is kept on it. When the ball is immersed in the liquid, the spring balance reads W3 and the weighing machine reads W4. W1 when ball is suspended from it. Okay. So वो true weight रहने वाला है. Weighing machine reads W2 when the tank of liquid is kept on it. Okay, so liquid का weight W. Fine. When the ball is immersed in the liquid, the spring balance reads W3, which is less than W1, of course. So W3 is less than W1.
बस अपवर्ड बॉयंट फोर्स है, राइट? ओके, एंड द वेइंग मशीन रीड्स W4, तो जो बॉयंट फोर्स इस पे पड़ा उसका अपोजिट इस पे पड़ा होगा, राइट? या एग्जैक्टली। सो W4 इज एक्चुअली मोर देन, sorry, W2, I guess. So W2 is less than W4, C, और W1 is bigger than W3, is like A. और क्या है, W1 less than W3, that's incorrect, और ये भी incorrect होगा, I guess. Okay, next question. If a liquid rises to the same height in two capillaries of the same material at the same temperature, the weight of the liquid in both capillaries must be equal. Liquid rises to same height in two capillaries of the same material at the same temperature. ठीक है, same height है, बस इतना ही है, right? The weight of liquid in both capillaries must be equal. Radius क्या है? Height same है, but radius अलग अलग है, शायद से. Okay, I mean the radius is like that. Okay, contact angle भी जो है, that's kind of a fixed thing. That just means, okay, inka radius must be the same. That's the only way this can be. So B is correct. The weight of the liquid in both capillaries must be equal. Yes, the capillaries must be cylindrical and vertical. Okay, ये अजीब है. What if they are not? C, I don't know. Okay, hydrostatic pressure at the base of the capillaries must be the same. No, not necessarily. तुम atmospheric pressure अलग अलग कर दो. What's the big deal? So C और D अलग लग रहा है. Just go with A and B. Next, 11th. हो सकता है कुछ और केसेस में एक्चुअल में सी के कुछ और केसेस में काम कर जाए कि कैपिलरी सिलेंड्रिकल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, इसलिए काम कर रहा है समहाउ, व्हाटएवर. N drops of a liquid, each with surface energy E joined to form a single drop. Then, okay, drops है liquid के, each with surface energy E. Some energy will be released in the process. Okay, energy released or absorbed will be this thing. ठीक है ना, कितनी एनर्जी रिलीज हुई अपने को वही देखना पड़ेगा. So energy is proportional to R square. Okay, अपने जो वॉल्यूम्स है, राइट? सो n टाइम्स R क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, मतलब कि जो कैपिटल R इज टू n पावर 1/3 टाइम्स R, राइट? तो क्योंकि वो R स्क्वायर से प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई एनर्जी, सो A डैश इज जस्ट इक्वल टू n पावर n पावर 2/3 टाइम्स E, राइट? सो जो पहले एनर्जी थी, राइट, n पावर 2/3 इज द थिंग. Just wait a second. Okay, E dash is this thing. So, oh yeah, this is the new surface energy, right? What we want is, of course, like इनका जो difference रहेगा, that thing. Yeah. I guess that should be the thing. And of liquid, each with surface energy E. ठीक है. So इसका difference यानी कि कितना, E times of n, I guess it's bigger than 1, so just say n power 2/3 minus 1 is the energy. तो अब इसकी एनर्जी ये है, which means कि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, this absorbed. So energy is absorbed and इसका ये रहने वाला है. So what? Oh sorry, n already. Okay, sorry. E हर एक की एनर्जी है. So n times E is the actual energy, total energy, right? Minus n to power 2/3. Right, that's why C is correct actually. Yeah, so energy release or absorbed will be this thing. And अब बताओ, release है कि absorbed है? पहले बड़ी थी, अब छोटी है, right? So of course energy release हुई. So A and C. Next question, 12th. Twelfth question is, a heavy block of mass something hangs with the help of 3 vertical wires of equal length and cross section. Area is shown. Wire 2 is attached. So mass कितना है? 150. Y2 is equal to 2y1, where y1, y2 are Young's models of wire 1 and 2. So okay, so y1 का है y and y2 का है 2y. y3 का अपने को पता है कि इसमें y3 का ही है ही नहीं. Okay. Center of the mass of the block. ठीक है. For this arrangement, mark the correct statements. Tension. Okay. The wire 1 and 3 should have the same Young's modulus, of course. Otherwise, इसका tension बढ़ जाएगा. And then like, yeah. Wait, इनका है ही ना same. Right. Okay. Right. Tension in 1 and 3 must be the same. Radius के बारे में कुछ बोला है क्या? Equal length and equal cross section. Perfect.
So A is correct. Or tension in 1 and 3 must be equal. Yes. So B is also correct. No, equilibrium के लिए of course. Okay, और क्या tension in 1 and 3 would be different? No. Tension in 2 is 75 kg. So y2 is 2 times of y1. मतलब यहाँ का टेंशन 2 times रहेगा. So like okay, कितना हो जाएगा? ठीक ऑडिट यहाँ से अपने पास में t आ रहा है, यहाँ से t अपॉन 2 आ रहा है, यहाँ से t अपॉन 2 आ रहा है. So टोटल कितना आ रहा है? 2t. दैट्स इक्वल टू कितना? 1500 newtons, right? So t is just equal to 750 न्यूटन्स आई वुड से. तो यहाँ से टेंशन कितना है? 750 न्यूटन्स. तो टेंशन तुम्हारा यानी केजी में कैसा है? आई डोंट गेट इट, बट इज या लाइक इक्विवेलेंट टू 75 केजी. ठीक है, आई गेस डी इज करेक्ट, बट यूनिट्स बहुत ही गंदे इसमें है, सो आई डोंट नो. 13th. 13th is two bars of steel are joined together as shown. The area of cross section of the left bar is 15 centimeter square and the area of right bar is unknown. So left bar का area दिया है, right bar का unknown है. The acceleration in both parts is same. Okay, Young's modulus दोनों बार स्टील का है. Cool. तुम्हें लेंस दिए and these are joined together. Area of right bar is 10 centimeter square. Wait. और ये फोर्स क्या है? ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? यहाँ पे तुम इससे पुश नहीं कर रहे हो, इंस्टेड तुम इसको सॉरी एक्सटेंशन इन द बोथ पार्ट्स. आई गेस यहाँ पे ये फिक्स्ड है और यहाँ पे ये फिक्स्ड है और समथिंग लाइक दैट. सो यू आर सेइंग एक्सटेंशन इन बोथ पार्ट्स इज द सेम. ओके राइट. ओके एक्सटेंशन सेम है. तो स्ट्रेन कैसे कैसे रेशियो में रहने वाला है? राइट. सो डेल्टा एक्स इज 1:1 और फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के रेशियो में रहेगा. So इसका 0.6 like okay 1 upon 0.6 is to 1 upon basically 0.4 is to 0.6, which is like 4:6, which is like 2:3 exactly. तो इसका जो स्ट्रेस रहेगा तो टेंशन या ओके 2:3 था नहीं या stress is also in 2:3. So you know और तुम क्या बोल रहे हो? ऑफ कोर्स टेंशन भी सेम होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंगली फिर एरियाज दोस मस्ट बी द रेशियो ऑफ 3:2, तभी इनका टेंशन सेम हो सकता है. दैट मेक्स सेंस. सो एरिया आर रेशियो 3:2 और या जो पहला वाला है उसका एरिया कितना दिया आपने को? 15 दिया है. सो इसका कितना चाहिए? 10. ए इज करेक्ट. और क्या बोला है? द स्ट्रेस इन लेफ्ट एंड राइट पार आर इन रेशियो 3:2 एग्जैक्टली. The decrease in thickness of bar is more for left. Thickness of bar. What do you mean by that? तो ये Poisson's ratio दिया है क्या exactly? नहीं, तुम्हें तो दिया ही नहीं है. So how? Okay, but इनका same रहेगा ना? Same रहेगा. That's the main thing. So you know जो इनका strain पड़ा है, अपन strain का ratio कितना है? 2:3. तो जो right वाला bar है उसमें ज़्यादा lateral strain भी आया होगा. Wait, sorry. क्या बोलते उसको? राइट. दूसरे जो क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेन है जो वो है दैट थिंग या तो उसमें वो भी ज्यादा आया होगा बिकॉज पॉइसन्स रेशियो. सो वो सेम रहेगा ना. दैट्स द थिंग. सो डिक्रीज इन थिकनेस इज मोर फॉर लेफ्ट. ओह शिट. सो वो स्ट्रेन की बात करें अपने को एक्चुअल में कितनी लेंथ कम हुई वो देखना है. राइट. सो एरिया इज इन दिस रेशियो. तो रेडियाई आर इन रेशियो √3:√2. तो अपने को इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लाइक 2√3 is to 3√2 बेसिकली. राइट. इससे बड़ा कौन सा है? आई वुड से दिस इज मे बी बिगर. सो इज 3√2 बिगर देन. अच्छा ठीक है, इसका रेशियो कैसे सकते हैं? वी कैन से इट्स लाइक √2 is to √3. इज दैट राइट? एग्जैक्टली. तो बड़ा कौन सा है? ये वाला. सो राइट के इसमें ज्यादा चेंज हुआ है फॉर द राइट बार. सो डी इज द थिंग. नेक्स्ट 14th है ही नहीं, इंटीजर टाइप है. ओके लेट्स डू इंटीजर टाइप देन. सो इंटीजर टाइप. फर्स्ट क्वेश्चन. A long capillary tube of radius r is dipped in water such that 3/4 power 1, so square root of 3/4 of the height it can rise is available above free level of water. Draw करो. Capillary tube, free level of water. Okay, height it can rise, so वो h है. What you're saying is
Oh, so कम height है than what is usually the thing, right? So like this, of course. Right, okay, okay. The angle of contact at the top level in the tube is pi upon W. What is the value of pi? What is value of W, right? Okay, right. 3 upon 4 to the power of 1 upon 2 of the height it can rise is available above the sea level of the water. So जो वो total rise हो सकता है, let's just call that height as h. So rho g h is अच्छा अपने angle of contact पता नहीं है. हाँ, अब जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट देखेंगे वो ना कि जो एक्चुअल में रहता है, राइट? बिकॉज अपने को पता है कि ये सरफेस राउंडेड रहने वाली है और एक्चुअल में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो रहता है वो ही रहता है. बट राइट, अज्यूम करो कि एकदम शार्प सरफेस है एंड वॉट एवर, फाइन, ओके. सो वाटर है, ओके. सो रो जी एच इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो ले लो, वॉट एवर. रो जी एच इज इक्वल टू जबकि जो हाइट एक्चुअली में होने वाली थी एच, वो अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसमें. Rho gh is equal to, or just say r, of course, right? 2t upon capital R, or it's the same thing as small r, right? तो ये small r चीज, yeah. Okay, so h is what? That thing. h is just 2t upon r rho g. तो अब कितना अपन यूज करें? 2t times square root 3 upon 2, right? So it's gonna be like square root 3 t upon r rho g. That is our height basically, right? So rho g times that guy, that's just going to be square root 3 upon r times t. Yes. So right, atmospheric pressure से इतना कम है ये. और oh god, this is very weird. Is this correct or not? And of course atmospheric pressure से इतना ही कम होगा ना ये. What else? Right. Or but it shouldn't be like more than atmospheric pressure because something doesn't make sense. मतलब ये bulge करना चाहिए. Oh, okay, angle of contact directly bulge थोड़ी ना होगा. It's just gonna decrease. Yeah, it's gonna decrease like that actually. Right. As तुम height कम करते जाओगे, eventually यहाँ पे plane हो जाएगा. That's the thing. So यहाँ पे angle of contact कितना है अपने को वो ढूंढना है, right? So ये जो रहेगा, that's the pressure. Yeah, okay. इतने से उतना कम है, right? That's the pressure. This is gonna be equal to 2t upon capital R, और capital R कितना है अपन निकाल सकते हैं. So this is R and this thing is small r, और ये एंगल थीटा है और इसमें जो ज्योमेट्री करनी पड़ेगी इसमें. So this angle is theta. ये capital R है, this thing is going to be small r. ये 90 minus theta, ये theta हो जाएगा. So cosine theta is just R upon capital. So like R upon cosine theta is our capital R. So उससे divide करते हैं अपन. It's going to be equal to 2t upon small r and then you got cosine theta. Isn't that right? Of course. So what does that mean? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया. Square root 3 upon 2 is equal to cosine theta. So yeah, that angle of contact is just going to be, pi upon 3. Sorry, shit. Pi upon 6. 30 degrees. So omega will just be 6. Next question. Okay, ये सब मरना चाहिए. Delete. Go to the second question now. A plate of area something is placed on the upper surface of of castor oil 2 mm thick, taking the coefficient of viscosity to be 15.5 points. Calculating horizontal force necessary to move the plate with velocity of 3 meter per second. Oh, ये तो easy है. So area कितना है? 10 power negative 2 basically. अब मुझे याद ही हो गया पूरा वो. Okay. 2 mm thick. So velocity कितनी है इसकी? Viscosity कितनी है? Okay, 15.5 poise. What is poise? Is that SI unit or not? Assume or SI unit. I don't know यार. ठीक है. Okay. At times. Okay, और क्या है? कितनी velocity है इसकी? 3 times 10 power negative 2. और upon the distance, which is 2 times 10 power negative 3. So 1.55 times 3.2 or something like that, I guess. So basically, yeah. Oh god. कितना जाएगा? 5 1 carried on, like 6 1 carried on, got 4.65, I guess.
upon 2, which is 2.325. This thing. Maybe. I don't know. Next question. I शायद से poise ऐसा unit है. I have no idea. Next. A body of mass something is connected to a wire of length 0.3 and of cross section. करो mass कितना है 10, wire of length 0.3, okay, cross sectional area 10 power negative 6. बहुत ही कुछ अपने को ऐसा ही मिल गया है, बहुत बढ़िया. Breaking stress, so stress divided by meter square, of course. Stress is equal to 4.8 times 10 power negative, basically like 48 times 10 power 6, right? Okay, और क्या बोला है? Maximum velocity, angular velocity with which it can be rotated in a horizontal circle, और ये body है connect to wire of length something. Okay, so yeah, okay, maximum, ठीक है, समझ गया. So वो कितना टेंशन लेने वाला है? Like omega square r is the tension, that thing upon area, that's equal to the stress, right? Let's do the thing. इसको मैं s बोल रहा हूँ, it's equal to s. So omega will just be, square root of a times s upon m times r, right? Which is, let's figure it out. So square root a कितना है 10 power 86 times ये चीज, so 48 basically, upon m times r, so ये times ये, r is just l basically, right? So there we go. 3, but the square root of 16, that's going to be 4. 4 is the thing, that's in radian per second. कहाँ पे चला गया? ठीक है ना, 4 radian per second. वो तुम्हें किस यूनिट में चाहिए वो मुझे पता नहीं, but I'm gonna give you in these units. Okay, next question. 4th. A sphere falls from rest into water at height 2 meter. The relative density of sphere is this thing. Find the depth to which the ball will sink. Once again अपन ये already कर चुके हैं, like 2 times. Right? कैसा होता है वो? G times density of water, which is 1 upon density of solid, which is 0.8 minus 1. That is the buoyant force. ठीक है, that's the effective gravity बोलना चाहिए. So it's upwards in this case. This is like G times E कितना जगह 8 upon 10. So it's going to be 5 upon 4 minus 1. This is like 1/4 of G, so 1/4 G, right? Okay, so 2 times of 1 is equal to जो भी ये depth में गया h times 1/4, that's thing. It's going to be 8 meters sink करेगा, right? Next question. Fifth. Distance between center of 2 stars is this thing. The mass of these stars are m and 16m, and their radii are this. The body of mass. मैंने देखा होगा ये, पता नहीं. Fire straight from surface of the largest star towards the smallest star. What will be the minimum speed to reach the surface of the smallest star? Round off to the nearest integer in the unit of gm upon a is the power of 1 upon 2. Okay. Oh, as a unit you are saying. Fine. So क्या है ये? Distance between 2 is, okay, 2 stars is 10a. The mass of the stars are m and 16m. So क्या रेशियो में वो स्प्लिट होगा, राइट? So एक पॉइंट होगा ना जहाँ पे दोनों की फील्ड, कंबाइंड फील्ड 0 हो जाती होगी, राइट? Where is that point in this? That's going to be in 4:1 ratio, I would say. So this is 1, this thing is 4. तो फिर ठीक है, इसका 1/5 लेते हैं, मतलब कि क्या 2a हो जाएगा, यानी कि ये 2a है और ये 8a है, राइट? So यहाँ पे बड़ा स्टार है of 16m and this thing is कितना? Small m. Radii are a and 2a, और ये जो बॉडी है उसको फायर किया सरफेस से इस स्टार की, ओके, टुवर्ड्स स्मॉलर स्टार. व्हाट वुड बी द मिनिमम स्पीड? तो इसको बस इस पॉइंट पे पहुंचना है, उसके बाद में कुछ नहीं है, राइट? ओके, करो फिर निकालते, लाइक जी एम अपॉन ए. पहले इस स्टार के बारे में करते हैं, क्या क्या हो रहा है. इनिशियली इट्स एट ए, so it's at 1 minus, अब वो कहाँ पे आ गया, अब it adds 8a from this point, so minus 1 upon 8. okay, फिर क्या, तो of course इसकी like energy decrease to be that much, right? Yeah, so that's the thing. And then final maths initially करते हैं यार, क्या जा रहा है, फिर जो भी है क्या फर्क पड़ने वाला है, initial minus final करो, what's the big deal. और फिर प्लस, तो इसकी initial क्या है, it's at distance what, 2, and then you got 7, so it's at 9, I think. So 1 upon 9, and that minus
दैट माइनस अब कितना है, अब ये यहाँ पे 2a पे डिस्टेंस है राइट, या सो माइनस 1/2 और समथिंग. Right. Okay. And this whole thing, right? Okay. GMM times 4 वो हो जाएगा. It's equal to half v squared basically, right? Exactly. क्योंकि वहां पे अगर स्पीड जीरो भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे तो चले जाने वाला है, राइट. सो या वी जस्ट वांट टू फिगर आउट कि v क्या होना चाहिए. इजंट दैट राइट? चलो करते हैं कैलकुलेट इसको. ये कंबाइन कितना हो जाएगा, -4/8 -5/8 हो जाएगा. सो 1 - 5/8 + 1/9 which is like 3/8 plus 1/9 which is 27 plus 8 कितना होता है 35/9 times 8. So ऐसे रहने दो 9 times 8. Yeah. Okay. So v square is just equal to gm upon a, and then 2 times is like 35/9 times of 4 or something. Is it correct? I guess it should be. Yep, it should be. So ये चीज हो जाएगी. Yeah. Of course. So that's v squared. तो अपने को बस ये कैलकुलेट करना है. In what? In the nearest integer to that, right? Round off the nearest integer in unit of course. So अपने को ये कैलकुलेट करना है. Square root of 35/36 basically. Huh. Interesting. It's like square root of 1 minus 1/36. हाँ ठीक है ना. It's approximately what? 1 minus 1/72, which is okay. Approximately 1. That's the thing. So 1 is the closest to it. Fifth is done. पैराग्राफ बेस कर दें, अपन कर सकते हैं और सब डिटेल रहने वाला है. ओके, इसको छोड़ देते हैं बाद में के लिए. सो दैट्स इट. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.